you're eating so much. Yeah. Or you're eating so less. How you will manage? If your family members might also be telling you, इतना कम कैसे चलेगा? इतना ज़्यादा खा रही हो, कैसे पतले होगे, right? So this is all about what? You must have heard that this is all about portions. We all have different portions, right? So it is important to understand the portion size, right? And I'll tell you the power of portion control today, okay? And how it relates to achieving and maintaining a healthy weight and how it can impact our overall health and well-being, yeah? So portion control, when it comes to portion control, it's not just about eating less कि मुझे कम खाना है अभी, okay? It is all about eating appropriately and mindfully. हम mindfully कैसे खा सकते हैं, okay? Because these days if you see excessive snacking, बहुत ज़्यादा snacking होती है और बहुत बड़े-बड़े portions में snacking होती है. If you go back, you know, couple of years back जब हम छोटे थे, बचपन में थे या फिर थोड़े से college days में थे, pastry size कितना आता था पहले? Anybody remember the pastry size was very small. इतना सा pastry size आता था, छोटा size आता था pastries का, right? How many of you have cut pastries on your birthday? Then you will remember, हाँ pastry का size इतना आता था, उसको cake बना के cut कर देते थे, right? How many of you have done that? I did it. That's why I remember very clearly कि you know pastry इतनी आती थी और अभी pastry का size कितना हो गया? पेस्ट्री का साइज कितना हो गया? इतना बड़ा हो गया पेस्ट्री का साइज, लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी वो मोटा हो चुका है. यस, इन ऑल वेज द पेस्ट्री साइज हैज increased. Obviously the price has increased, the calories have also increased because वो इतना बड़ा साइज हो गया, तो बड़ा पोर्शन साइज हो चुका है वो, राइट? वो बड़ा पोर्शन साइज हो चुका है. So everything is changing. So it's very important to understand the portion sizes because that is increasing the obesity rate and that is increasing the health issues. Very simple. पहले हम छोटा पोर्शन साइज खाते थे, उसमें भी हम सेटिस्फाई हो जाते थे. अभी हम बड़े बड़े पोर्शन साइज खाते हैं, उसमें भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं. And that is the root cause that we are putting on lot of weight and lot of health issues are coming up. Okay, so it is important to understand, right? And these days what also we are doing is अभी different variety के डोसा भी आ गया. डोसा with the cheese. Have you seen those things? डोसे के ऊपर पूरा चीज डाल के आपको मसाला एकदम बढ़िया, आपके जो यू नो स्ट्रीट में जो डोसा मिलता है वो इस तरीके का मिलता है, राइट? 99 डोसा, 99 वैरायटीज के डोसेस जिसमें आपका पूरा स्टफिंग करके पूरा उसको घी मक्खन बटर से पूरा का पूरा वो करके आपको दिया जाता है, राइट? मैगी विथ चीज, मोमोज विथ चीज, हर चीज में हम चीज ऐड करें. So that is increasing the density of the food as well. Okay, so this is a challenge now and it's essential कि हम अपने आप को familiarize करें portion sizes के साथ कि हमें कितना खाना चाहिए. Okay, by using those measuring tools like kitchen scales can help you, you know, visualize those portion sizes accurately, and that's why we use kitchen weighing scale these days. Yeah, so that we know how much is appropriate for us. Or maybe you can use a smaller plates. Okay, smaller plates is also a very practical strategy for that because जब हम उस छोटी प्लेट को भरा हुआ देखते हैं हमें लगता है बहुत ज़्यादा है, right? And research has also shown that using a smaller plate can make portion size appear larger and leading to increased satisfaction. क्योंकि कभी-कभी you know mentally we are not satisfied but physically we are satisfied. हमारा पेट भर चुका है but mentally हमको लग रहा है यार बहुत कम खाया हमने तो. ऐसा हुआ है किसी के साथ, right? That we have mentally we are feeling, no, I have not eaten, I have eaten very less, let me eat more, but there is no place in the stomach. Our stomach is full. So it is all mental game again, guys. And I was reading, you know, that brain, you can fool your brain. You can fool your brain by using again as an example, using a smaller plate and filling it up, and then your brain will think, "Arey, ye to full hai, right? I'm eating too much," right? So this simple and effective technique can actually prevent overeating by tricking our brains into feeling more content with the smaller servings. Understood? That's why portion size is very important. Yeah. And then comes the mindful eating. Okay, mindful eating, because as I mentioned that portion size is not about eating less. Portion size is being mindful about it. Okay, so this is mindful eating is another very, very important concept. If you master it,
you will realize that how important role it plays in keeping us healthy. Okay, and obviously it's a practice. Okay, mindful eating is a practice that encourages us to be fully present during meals, paying attention to what and how much we are eating. हम क्या खा रहे हैं, हम क्या नहीं खा रहे हैं, that is mindful eating. Okay, imagine, you are sitting in front of the TV with a bag full of chips. पूरा chips आप भर के बैठे हुए, and suddenly the entire bag is empty. What is it? उसको क्या बोलोगे आप? पूरा बैग आपका खाली हो गया टीवी देखते देखते, और रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो खत्म हो गया. That is called as mindless eating, where we consume food without truly enjoying or being aware of it. होता है ना ऐसा कि अरे पैकेट खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, और दे दो. राइट, चाय पीने से पहले ही चाय खत्म हो चुकी है, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके साथ हमने बिस्किट खाया, ये खाया, वो खाया, चाय का टेस्ट ही नहीं पता चला. ऐसा मेरे साथ होता था. ओके, व्हेन आई यूज्ड टू कम फ्रॉम ऑफिस, हैविंग दैट बिग मग ऑफ चाय, बिग पैकेट ऑफ बिस्किट खाया, पता ही नहीं चलता था, फिर एक और कप पीना. दिस इज कॉल्ड एज माइंडलेस ईटिंग, which knowingly or unknowingly we all are doing it or have done it. Okay, so but when you are in your weight loss journey, it's important that we should do mindful eating. Enjoying, I tell all my clients that you eat whatever you want. Okay, there is no restriction कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, आप खा सकते हो. Occasionally you can enjoy everything. There is no deprivation. But what you have to do, you have to enjoy every bite of it. Because when you are enjoying every bite of it, allowing our bodies, to recognize when you are full, by avoiding those distractions. Okay, by avoiding those distractions, क्योंकि अगर distracted रहेंगे, टीवी देखते हुए खा रहे हैं, अपने मोबाइल में देखते हुए खा रहे हैं, right? What will happen? Mindless eating will happen. We will not feel full. We will again want for more. Okay, we will again want for more. So what we have to do is, when you are eating meals, make sure you are sitting with a focused mind. आप बिल्कुल focus होके खा रहे हो, नहीं तो क्या होगा? End up eating more without feeling the fullness, and that's what might be happening. Some of my clients have mentioned that, कि टीवी देखते हुए खाते हैं, पता ही नहीं चलता कब खाना खत्म हो गया. And then when we हम जब उनको टोकते हैं कि आपको थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग करना है, धीरे धीरे खाना है, च्यू करके खाना है, बिकॉज डाइजेशन स्टार्ट्स वेयर. डाइजेशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट नहीं हो रहा, डाइजेशन आपके माउथ में, आपके मुंह में स्टार्ट हो रहा है. यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका डाइजेशन. अगर ब्लोटिंग और ये गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम माइंडलेस ईटिंग कर रहे हैं. ठीक है, so that we have to do it in order to feel full, so that आप अपनी बॉडी के हंगर क्यूज, फुलनेस क्यूज को समझ सको कि आप फुल हो गए हो, आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है. राइट, एंड नाउ आई विल टेल यू हाउ स्मॉलर पोर्शंस कैन आल्सो लीड टू वेट लॉस. अब पोर्शन साइज तो हम बता रहे हैं कि आपको इतना पोर्शंस खाना है. इट विल आल्सो लीड टू वेट लॉस. हाउ इट विल लीड? When we know precisely हमें कितना खाना है, we can make informed choices about our meals and snacks. We'll be able to better control our hunger and appetite, right? By consuming balanced and appropriately portioned meals. अगर आप देखो कि balanced meal हम खा रहे हैं, हम प्रोटीन भी खा रहे हैं, फैट भी खा रहे हैं, कार्ब भी खा रहे हैं, बहुत सारी सब्जियां भी खा रहे हैं, जिससे हमें फाइबर मिल रहा है, ताकि हमारा जो है गट बैक्टीरिया अच्छा रहे, right? So and it also prevents your certain spikes and crashes also. अगर आप balanced meal खा रहे हैं तो एकदम आपका sugar spikes भी नहीं करेगा, क्योंकि it's a balanced meal. And it will give you energy for a longer time. You will feel full for longer, reducing the temptation to reach for unhealthy snacking. Right? So इसीलिए portion size important है. आपका digestion भी improve होता है small portion size, क्योंकि वो absorb आपके nutrients को ज़्यादा absorb करेगा, आपका better digestion रहेगा. Okay, and you can with the larger meals what happens is हमारा जो digestive system है वो overload हो जाता है, leading to discomfort, bloating and indigestion. But smaller meals में क्या होता है, digestive system जो है handle कर पाता है easily smaller meals को, उसको digest कर पाता है better. Okay, and also it is sustainable. Now portion size sustainable क्यों है? Are you realizing that portion size are sustainable? Yes, portion obviously is not a short-term fix or a fad diet. It's a sustainable lifestyle change that can lead to lasting improvement in your health and weight management. Okay, because portion control जो है is like riding a cycle, is learn to riding a cycle. At first
it requires some effort and practice कि आपको कितना खाना, आप measure कर रहे हो, अपने portions देख रहे हो, but once you have mastered it becomes second nature. Over time, choosing smaller portions and practicing mindful eating can become integral part of your daily life. It becomes easy. And obviously it allows flexibility also in your eating habits. Because it's not about giving up your favorite food, rather enjoying them in moderation. Moderation में आप सब खा सकते हो, आप जब पोर्शन साइज मेंटेन करके रखोगे. एंड दिस अप्रोच ऑल्सो लीड्स टू बेटर रिलेशनशिप विद फूड. अब आपको ये नहीं है कि हाँ मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, आप सब कुछ खा सकते हो, बट एक पोर्शन साइज में, एक मॉडरेशन में आप इंजॉय करो, राइट? एक मॉडरेशन में आपको इंजॉय करना है, मेकिंग इट इजियर टू मेंटेन आवर डिजायर्ड वेट एंड ओवरऑल वेलबींग. तो ये इंपॉर्टेंस है एक माइंडफुल ईटिंग की और एक पोर्शन कंट्रोल की. सो अगर मैं कंक्लूड करूं, देन अंडरस्टैंडिंग पोर्शन साइज, practicing mindful eating, reducing your portion size are essential component of a healthy lifestyle.